सनम मोहब्बत की कसम। मिल के बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। हो सनम इन यादों की कसम। समझे ज़माना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना। नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल ना जाना। आँखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। हो सनम तेरे प्यार की कसम। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते। है चाल में तेरी जाली, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभालना दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है, रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों
की चादर काली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें तेरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि तेरा जलवा कर देगा मुझे दीवाना, जी भर के मुझे को देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जाल उठाने को जी चाहता है, दिलो जाल लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, वो तो हमत उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज़्ज़त वो पाई, किसी के मनाने में लज़्ज़त वो पाई, लज़्ज़त वो पाई, किसी के वो पाई के फिर रूठ जाने को जी चाहता
चाहता है, मेरे रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है। जलवा जो उछल भी है सामने भी, वो जलवा जो उछल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो उछल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो उछल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। नीरे गा करे ग नीरे मा म ग म नीरे ग गरे ग नि गरे रे ग ग म म ध नि सा स नि नि ध ध प प ग रे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि नी रे ग। मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए के छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। यूं ही बरस बरस खाली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मेरी
खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर दे अपनी बाहों में। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ये दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ ही आई वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा तेरे दिल पर। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर दे अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है पास मेरे आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे।
मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैं निगाहें। मेरी आँखों में गिले शिकवे है और प्यार भी है, आरज़ुएं भी है और हसरत दीदार भी है। इतने तूफान इतने तूफान इतने तूफान मैं आँखों में छुपाऊं कैसे, मैं निगाहें। शौक नजरें ये शरारत से न बाज आएंगी, कभी रूठेंगी कभी मिलके पलट जाएंगी। तुझसे निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि
तेरे और मुझको लेके चले ये दुनिया बढ़ के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता ये तू कभी सोच ना सके।
Here I am performing the famous monologue तुला शिकवीन चांगलाच धडा from ती फुलराणी, which is written by पुला देशपांडे. असं काय मास्तर साहेब, गधडी काय, नालायक काय, हराम साली काय. थांब थांब, तुला शिकवेन चांगलाच धडा, तुझ्या पापाचा भरलाय घडा. मोठं समजतो स्वतःला मास्तर, गटारात घाल तुझं शास्त्र. तुझं मसनात गेलं ज्ञान तुझ्या तोंडातच घालेल शान. हा तुझा तुझा क तुझा क तुझा ग तुझा घ वर पैजेचा घेतो एडा. थांब, तुला शिकवेन चांगलाच धडा, तुझं उतरून समजा माज, मग येशील गुंडाळून लाज. माझे चाटत येशील बुट, म्या म्हणेल आज इकडं कुठं. हात पकडून मागशील भीक, म्या म्हणेल आधी शुद्ध बोलायला शिक. उगा वळवळ करताय किडा, तुला शिकवेन चांगलाच धडा, तुला दाखवतेस सोरा, तू बघशील माझा तोरा. ओ हो हा हा हो स्वीट लवली चार्मिंग ब्युटी. समजे धरतील मंजूचे बाय. समजे म्हणतील हे मंजू, हाय दिलीप, हे मंजू, हे दिलीप. मंजूबेन केम छो, हाऊ डू यू डू, कम ऑन हँगिंग गार्डन, हे आय बेग अ पार्डन. मग कुठून येईल राजकुमार, सफेद घोड्यावर होऊन स्वार. नजरेला जेव्हा नजर भिडल, झटकन माझ्या पायाच पडेल. म्हणाल राणी तुझ्यावर झालो फिदा, क्या खूबसूरती और क्या अदा. माग जे हवंय ते. म्या मात्र गावठीच बोलत, मनाची गाठ अलगद खोलत. म्या म्हणाल नको असं, लोभात होईल उगाच हस. कुंपणा पाटात सरड्याची डाव, टिटवी नका दे दर्याची हा. हिऱ्याच्या कडेला सुताईचा तोडा, गटाराच्या पाण्याला सोन्याचा घडा. अगं बाई, राजा म्हणाल हे प्यारी धरू नकोस राग, हो माझी सून. दरबारी म्हणतील अगं राजाचा मान तरी राग. तोरण बांधा रांगवा काढा, त्या अशोकाला शिकवेन चांगलाच धडा. मग म्या म्हणाल राजाला, त्या अशोक मास्तराला बेडाच ठोका, शिच्याचा रस त्याच्या कानात होता. तलवारीने त्याची गर्दन छाटा, नाहीतर चापकाने फोडा. हा राजा म्हणाल ए हुशार, धाडा रे शिपाई स्वार. मग राजाचे शिपाई धरत्याल तुला, तू म्हणशील म्हणजे सोळी उग मला. लोळशील, धरशील पायाने लोळशील कसा, रडत राहशील ढसा ढसा. तुझा ख तुझा ग तुझा ग तुझं मस्कत अंगावर ये ना. भोग तुझ्या कर्माची फळ, तुझ्या चुरू चुरू जिभेला कायमचं टाळ. राजा म्हणाल त्याची गर्दन छाटा. मी म्हणा जाऊ द्या, गरीबाला सोडा. तू म्हणशील मंजू देवी तुला आलो ग शरण. मी म्हणेल शरण आल्यावर देऊ नये मरण. थँक्यू.
The camera is rolling, sir. Rolling? Where? Sir, rolling means camera is on. Now you can start. Oh, that's called rolling, is it? Okay. You have to start, sir. Oh, okay. Can I start? Okay. Hello there. I'm Brown. My name is Alfred Roger Brown. I'm an English teacher, both spoken and written. You know me, right? You met me in a similar setup around 6 years ago. I'm a hard-working person. I'm sorry, I'm just not used to this format, but I'm genuinely trying to change. This pandemic has been bad for people like me and people in a similar profession. Who would have thought that one day we would have to market ourselves so that students and parents could believe that we are adaptable to change? Let me be honest, I have much to learn. But if I, as a teacher, do not make the beginning to overcome a challenge, how can I set the right example for the students, right? Today is a big day. I have actually invited a few students and their parents to come and visit me in person. Yes, despite the pandemic, I had to assure them that this place is fully sanitized and I'm vaccinated too. Strange though it may sound, students are actually going to test my capability on whether I can teach them using an online medium. Sad, isn't it? But you know what? I have also invited few of my favorite students to come and help me with some of the questions that may get thrown at me. So, today is a big day. So please wish me luck. Oh, hi Daljit. Please come. So nice to see you. How are you doing? And more importantly, how has been your progress with English? I'm very keen to know. Good, Sirji. Meaning I am fine. Sirji, I am happy to tell you I have won a competition. Wow. Nibandha competition. Meaning essay competition. Oh. In English. Wow, so proud of you. By the way, what was the topic of your essay? Sirji, you forgot my favorite topic, cow. That great topic. 2 legs forward, 2 legs backward, 1 tail. It was great, na Sirji? But I made it even badhiya, meaning greatest. Really? What did you do to make it great? Sirji, I wrote, cow is a dangerous animal. What? Cow is a domestic animal. People love it. People even worship it. No, Sirji, it has become dangerous. Sirji, when you see a cow in the eyes and the cow says "Ma," 10 people coming running after you with lathis. What? You cannot say "Chi" to cow pissy. Urine. All political parties say everywhere, drink cow urine and disease go away. Cow shit, dung, sold online. What? There is also a Karnalai, meaning ministry, and there is a app also, Sirji. You know app? No. I will teach you. There is an app to manage cows also. Wow. Okay, so I get it. Cow is very important now. But dangerous. Understand, Sirji. You lose yourself, your photo in police station Right. in missing complaint. Correct. You lose your cow, whole police station coming to your house. What? Now you see how dangerous it is. Oh, totally agree. That's really dangerous. Oh, hi. Namaste, sir. Hi, so nice. Are you Daljit? Let me surprise. Sir. Meaning, how are you? I'm doing fine. How are you doing?
So nice to see you and thank you so much for coming. நான் நல்லா இருக்கேன் சார். I am fine. Sir, my potato tree, tomato tree, guava tree, banana tree, all big business, sir. Now selling online too, sir, using app. I have Ravikant Farm, sir. Wow, so good to hear that you're doing so well. By the way, we still cannot forget your essay on the train journey. அதெல்லாம் எப்படி மறப்பேன் சார்? How can I forget that, sir? Sir, but I want to show you my improvement, sir. Can I tell you about my temple journey now? Oh, you mean a journey across temples? No, sir, not across temples. Just one temple, sir. One temple? Then how do you call it a journey? See, sir, listen. Like for every journey, you have to prepare for temple journey also, sir. So, first in the morning, you have to do yoga, sir. Yoga for a temple journey? Yes, sir. See, sir, in the temple line, you have to twist and turn, and people push here and there, sir. So you have to be, அது என்ன சொல்லுவாங்க, flexible. Flexible, sir. Oh, okay. You mean just like in the Mumbai local trains? Yes, sir. It is a 6-hour long journey, sir. 6 hours. And you need one important raw material, sir. Towel, sir, to wipe the sweat, and binoculars too. Binoculars? Are you talking about a temple journey or an animal safari? Otherwise, how will you see the deity, sir? We go in free line. Okay. And we see from far, sir. Oh. So no binoculars, the deity appears chinnadu. Small, sir. Right. Listen, sir. Before you enter the line, you have to take deep breath. Okay. And then you have to stretch, sir. Then you have to enter the line. Oh. Then the line moves fast. Okay. Then slow. Then fast. Then slow. People fall on you, sir. You also fall on them. People push you, sir. You also have to push them, sir. It is like What? competition, sir. Rope pulling. Tug of war. Yes, tug, that only, sir. Okay. I am very excited, sir. Right. After long wait, deity coming near, sir. Oh. Yes, slowly I can see Aarati, sir. And I can hear the bell ring and some chanting. Suddenly, a person from behind is shouting, sir. I get scared. Look behind and ask him, Innappa, enna aachu? But he keeps on shouting, sir. I feel concerned for him. Correct. Then finally he stopped and I said, okay. But what I see? Balan had pushed out of the temple, sir. What? You didn't get to see the deity? Yes, sir. We get konjan nimisham, few minutes. Right. In that man shouted and I got pushed out, sir. Oh. But sir, came back with laddu, sir. Prasadam, take. Oh, laddu. Just like what you got in your first English test, huh? Anna, sir. Joking. Sir, they say God is everywhere, sir. Yes. So it is okay. And they say God does miracles, sir. Correct. And I say, if you get to see his idol in the temple, that itself is big miracle, sir. Yes. Totally agree. Oh, look at that. See you, sir. So happy. See you. Are you leaving already, Bhavara? Leaving. Sir, no, sir. I see you. So I'm happy. So you're saying that you're happy to see me. I'm happy to see you too. How are you? Fine, sir. Fine. Are you still with the ship? Yes, sir. Lots of sheeps. Lots of...
Have you been moving a lot of ships? No, sir. My sheep, small sheep, keep running meh meh. Small cute sheep. Oh, you're talking about the sheep, the animal. Yes. Oh, but now you have me confused. Sir, last time I said sheep. Bo, that sheep. Oh, so that means you've changed profession. Yes, sir. Pandemic, sir. Lockdown. What to do? People remove me from job. Oh, So now I go back to my gaon, manje village, and take care of my sheep. Oh, I can understand. So how is life in the village? Life okay, sir. People getting very scared. They काय म्हणतात ते? Virus. Virus. Waiting for लसीकरण म्हणजे vaccination. Oh, but are you saying you are not yet vaccinated? Not even a single dose? Sir, for vaccine we must go to town. Nantar appointment system on the app. It is very tough, sir. See, sir. First, open app. Nantar register. Nantar OTP. Finally, when OTP come, app not working. Time out. And we keep trying this again and again for many days. And finally, when we register, find center, पाहतोय काय? No slot. Every day we sit with the phone म्हणजे tension. Correct. We keep exercising our both म्हणजे fingers and we find slot. When we find slot, OTP come. OTP come, slot not come. Slot come, OTP not come. And we play this game every day, sir. Like fastest fingers first on KBC. Right. Like that. But no success. Very sad, very sad. This is. Oh, hi. I'm Ashtipari sir. Meaning, may I come in? Yes. Brown sir, how are you? So good to see you, sir. I am very good. So good to see you, Banerjee. Please meet some of my students. This is Babu Rao, Ravikant, Daljit. I know you. Brown sir, আপনার বারে में বলেছি। Meaning, he told me. Yeah. So good to see you, Banerjee. So nice of you to come. Thank you for coming. So how have you been doing? ভালো স্যার, কাজ হচ্ছে। Meaning, बहुत किस happening? Good. I am barber, you see. छोटा दुकान, माने small shop. Pandemic बहुत बुरा है। कोई नहीं आता। कि बोलो, what to tell? People very afraid. Be sanitized. Still all afraid. अभी थोड़ा लोग आता है। ये देखो सर, ये सेल्फी का जमाना है। Boys, young men, all want to look good. हम good barber, not charge much, but एक style, so much time. किसी को स्पाइक चाहिए, किसी को बीच में स्पाइक, साइड में क्रू कट, किसी को एक साइड है, किसी को एक साइड साफ, सब बॉलीवुड हीरो को कॉपी होता है और Sure, I can understand. But I need to tell all of you why I have called you here. See, I'm a teacher, but I'm in a big problem. I need to start online coaching. But like you know, I have no experience of teaching people using the online medium. I'm not well versed with computers. In fact, see here, I don't even own a smartphone. Many students and parents are asking me, what tools do you use? What software do you use? And I don't know how to answer them. So I need your help. You need to tell me, how can I start online coaching? How can I get prepared for it? And more importantly, parents and their children are coming to visit me soon. So I really need your help. Please help me. அவ்வளவுதானே சார் கத்து கொடுத்துடுவோமே வாட்ஸ் Oh, we will teach you. Oh, that's so relief. Oh, thank you.
get started? Simple, Sirji. You get smarter. You mean I'm not smart yet? உங்களுக்கு புரியல sir. You didn't understand. You need a smartphone, sir. Yes, sir. Smartphone, many apps, very useful. ब्राउन सर, ये बाबा आदम के जमाने का फोन छोड़ो सर, ये जमाने का फोन लो. Oh, but how will this help me? Sirji, you will get connected to the world. First, we will teach you how to use WhatsApp. And sir, you will automatically get enrolled into university. Oh, such a powerful tool. But why would I want to get enrolled into a university? अभी आपको बहुत पढ़ना बाकी है सर. Yes, sir. WhatsApp University. எல்லாமே படிக்கலாம். You can read everything, sir. Oh. Politics, films, jokes. And you will be rich with knowledge, sir. Mostly useless knowledge. आपका ग्रुप है? You guys have a group? Banaji, stop that. Why would I need useless knowledge? And is this a must? It is a must, Sirji. I have so many friends who wish me good morning. Yes, sir. Every half hour, people wish you good morning. Then you must wish them good morning. And then you get birthday wishes. And then you share jokes with everyone and comment with Mimmi. Mimmi? What's Mimmi? No, sir. Mimmi, sir. Sirji, it is meme. It is a video, animated video of 6 seconds. I will show you, Sirji. If you want to show thumbs up, you show like this. If you want to show you're laughing out loud, you have to do. And if you want to show rolling on the floor laughing, you have to do. And sir, if you want to show you're angry, you show. Sir, if you want to show you're sad, you do. Okay, so I get it that you can make a lot of friends. Friends? What friends, sir? Sometimes in a group of 200 people. 200? Someone's birthday. If someone starts wishing, you also wish. Even if you don't know the person? Yes, sir. Or else no one will wish you. You see? Oof, all that is so much pressure. I just can't get my head over this WhatsApp. Anyway, what else should I do? We will open Facebook for you, sir. Facebook? Is that some book and where do you get it? It is not a book, sir. It is app. Okay, but how does this help? See, sir. One day, my boy, he came from behind and he did bow. I turned and I did. He captured my picture, sir, and uploaded on my Facebook page, sir. Sir, I got 400 likes. Likes? By likes you mean appreciation? Yes, sir. Really? Sir, one time I took selfie with a cow on the road. Sir, selfie, you know what is selfie? Jaldi kate, sir. Sirji, this is selfie. We capture ourselves. You take your own photo? Yes. Okay, so then what happened? Sirji, 3 people came to my house and asked me if I am harming the cow. I got frightened. What unluck, Sirji. And one time, I took selfie with a poor man and said, help him. Many likes, hugs, hearts, no one to help him. And sir, whenever I go to vote with ink on my finger, I take selfie and I post and I feel so proud. Such a responsible man. I can learn all that, I can get smart, but it does not help me with my immediate problem. Students and their parents are going to come and visit me. They're going to ask me questions about online coaching, and I'm sure I don't have answers for them. I need your help with that because I need to run my classes, I need this job, I need this money. So please help me. मिल गया आइडिया मिल गया
पड़ोसन देखा है? अब समझ में आया सर जी, इसको देखकर लगा कहीं तो ये कैरेक्टर मैंने देखा है। सर पड़ोसन देखा है आपने? Yeah, some time ago, but not in a while. धत तेरी की, मैं पड़ोसन फिल्म की बात कर रहा हूँ और आप अपने पड़ोसन की बात कर रहे हो सर। But what about the film? तो आप सुनो, जैसे वो फिल्म में था, ब्राउन्सर आगे हम पीछे, माने आवाज ब्राउन्सर का, दिमाग हमारा, समझे? आवाज ब्राउन्सर का, दिमाग हमारा। Okay, but how will it actually work? Got it. Simple, sir. You see this table? Yeah. You stand in front of the table Okay. and face the audience. Okay. Sir, we sit back, make notes on a sheet and show you uttars, manje answers. सर जी, if they ask a question, you just go ahead, Okay. think, and come back, look at the answers and reply. Simple. Okay, but all this sounds so tricky. And I'm an honest person. I cannot be cheating someone like this. No cheating, sir. Last moment be only hell. Don't think so much, sir. Don't think so much. Yes, sir. Don't think so much. Okay. Okay. Then let's do it. I'm just not comfortable with this. I'm an honest person. I cannot be misleading someone like this. It is okay, sir. We don't have time. That is why this arrangement. सब ठीक होगा सर. Everything will be fine. We help you now, sir, and teach you well before classes. तुसी फिक्र न करो सर जी, हम सब संभाल लेंगे. We will take care of you. Hello, I am Subramanian and this is my son Abhishek. Brown. I mean, I'm Brown. Yeah, so? I mean, my name is Alfred Roger Brown. Oh, we spoke on the phone. Right, Yeah, right. okay. Please come. Okay. Take your seat. Just give me a few minutes. I'm expecting another parent and child. Okay. May I come in? Please. Hi, I'm Alfred Roger Brown. I guess you're Miss Shruti. Yes. And I presume your son Suraj? Yes, we spoke over the phone. Right, we did. Please, take your seat. Thank you. Mrs. Subramanian, excuse me. Yeah. This is Miss Shruti. Miss Shruti, Mrs. Subramanian. Can you just give me a couple of minutes? I'll just get some water for you. Sure. Hello, I'm Subramanian. People call me Subri. Believe Abhishek and Suraj are classmates. Yeah. I'm an investment banker. In SC Bank, you know, VC Life. Yeah. Can you please pass it on? Thank you. So, can we get started then? Yeah, please. So, I just wanted to thank all of you for coming here in person despite the pandemic. This pandemic has been really tough for people like me and other teachers too. You know what? We've been struggling. We're finding different ways. Mr. Brown, sorry to interrupt, but we have just come here to physically check, just to see if what you're saying is true. Me too. Okay. Are you comfortable taking online classes? Online classes? Yeah, I'm okay. Yeah? My son Suraj has some questions for you. Oh. Yeah, Abhishek too. Okay. Sir, do you have a tablet? Yeah, but I keep it at home. See, usually I have one in the morning and one in the evening. Tablet kar medicine. Abhishek, it's squarish.
Right. Size tablet is a larger phone? What? Size tablet, larger phone. Yeah. Tablet is a larger sized phone. Tablet is a larger sized phone. Yeah, kind of. Let me ask you, sir. You Zoom? Zoom? I'm sure I do. Pinch any picture and spread finger to zoom. Mr. Brown, they are asking you about the Zoom software that we use for online classes. Oh, software! Online classes! Yeah, right. Yeah, why does he take so much Even time to I'm answer? wondering, he keeps talking to himself. Window, within window, within window. Really? Is that your answer? I think it's a good answer, sir. Suraj, can you explain? Yeah, Windows meaning Windows platform. Oh, yeah, right. And the second platform is Zoom within Windows. Yeah, right. And then it's people peeping out of Windows within Zoom. Wow, super. That explains Windows within Windows within Windows. Wow. Snapchat. So, one question. Yeah. Why do you keep going to the table every time we ask you a question? Yeah. कुछ छुपा रहेगा वहाँ? No, I mean, nothing like that. Nothing. I just can't do it. I'm sorry. I need to make a confession. I didn't know the answer to any of the questions you asked me. ये क्या हो गया सगळं खेळ संपलं अच्छा खासा हो रहा था ब्राउन चोर का आत्मा जाग गया ब्राउन सर हरिश्चंद्र का औलाद हो गया क्या करें What? I don't know much about the internet or the online world. In fact, I don't even use a smartphone. Really? This is unacceptable, Mr. Brown. We came here for reputation. And you made a fool out of us. If this is the level of honesty, Mr. Brown, you as a teacher is going to portray, just imagine what these students will imbibe. I really don't want my son learning such values. Ma'am, I'm sorry. I'm sorry, but I'm sorry that I offended you. But not having knowledge about the internet, not being able to run my classes, I just became desperate. I didn't know what to do. I actually had to call upon some of my older students. Please come over. Come. What's happening? What is Mr. Brown? My students came to me at short notice, leaving whatever they were doing only because I called them. And they come from far, from Chandigarh, Satara, Chennai, Kolkata. Have you seen this anywhere, that students would do this for their teachers just because we called them?
Shruti ma'am, Subramaniam sir, Kedungo, please listen. Our sir was not in favor of all this. Nangada idea kudto. It is we who gave him this idea. I convinced him for the Padoshan type idea. क्या करेगा? आप लोग आने वाला था and he wanted students. Time नहीं था ना? Mr. Brown is a very good teacher. He changed us. Abhari to him. We have progressed in our nokris, our jobs because of him. Suraj, let's leave. Come on. Abhishek, let's go. Sir, Sir, we'll help you. sir, in our school too, we taught our teachers about the online world. Yeah, then they started teaching us and saved us a year from getting wasted. We've heard a lot about you and want to learn from you. We teach you how to use online for a few days. Yeah, not only us, you can teach our friends too. We'll promote you through Facebook. That's so kind of you. Thank you so much. जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल का के सुनाएंगे, हम तो साथ रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे. श्रुति मैम, आप भी गाओ ना. जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो साथ रंग है, ये रंगी बनाएंगे. श्रुति मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए. सुब्रमण्यम सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. खुशियाँ बांटेंगे हम. हर गम मिलके सहे, फिर क्यों आंसू बहे.